Assalamu alaikum everyone, this is Yasir Saeed and I welcome you all to the LMS IELTS online bootcamp registration. जब आप enrollment की रिक्वेस्ट कर देते हैं तो हम आपको एक लिंक भेज देते हैं फॉर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, ठीक है। यहाँ पे जाके यू नीड टू एंटर इन योर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, योर लेट्स सपोज योर यूज़र नेम। अगर आपके यूज़र नेम किसी दूसरे यूज़र के साथ मैच करता हुआ, दिस फॉर्म विल रिटर्न एन एरर। आप यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस रखें, एंटर इन योर पासवर्ड एंड क्लिक रजिस्टर। That's it. Congratulations, you are registered. Now what you need to do is you need to go to your inbox where you will receive an email from IELTS Karo. So this is basically the verification email जो कि आपको आएगी. Click on it. You'll open up email verification. Hi Asasai, thank you for signing up. To complete your account sign up, please click on the button below to verify your email address. आपने इसके ऊपर क्लिक करना है and your email address will be verified. In case if it is not working, तो आप इस लिंक को यहाँ से कॉपी करें और आप इधर पेस्ट कर दें। You are now successfully verified and this is what happens once you log in. You are directly going to be taken to your dashboard. You will see you can click to my profile, your first name, last name, username and your email address. उसके बाद आप जाएं अपने enrolled courses में। यहाँ पे आपको फ़िलहाल कोई भी एनरोल्ड कोर्स नज़र नहीं आ रहा होगा। उसकी वजह ये है क्योंकि वंस यू कंप्लीट द पेमेंट and then sign up, our IELTS Karo student support team will manually add you and enroll you to our IELTS online bootcamp within 24 hours and you will get a link to that. उसके बाद यहाँ पे आपको वो नज़र आ जाएगा जिसके अंदर आप क्लिक करके एनरोल कर सकते हैं. Once our team enrolls you, so this is how you will be shown in the course. और ये आपका इस तरीके से डैशबोर्ड नज़र आएगा. इफ़ यू कैन सी राइट नाउ कि आवर टीम हैज़ मैनुअली एनरोल्ड यू आफ्टर वेरीफाइंग दैट यू हैव पेड, और आपका एनरोल्ड कोर्स 1 और एक्टिव कोर्स 1 आर है. सो दिस इज़ बेसिकली व्हाट योर IELTS ऑनलाइन बूट कैंप इज़ गोइंग टू बी. वंस यू क्लिक हेयर यू विल बी टेकन टू द IELTS ऑनलाइन बूट कैंप. ये हमारी एक छोटी सी वीडियो दैट यू कैन वॉच टू अंडरस्टैंड मोर, एंड दिस इज़ व्हाट द LMS पोर्टल इज़. यहाँ पे आप अपना एक रिव्यू दे सकते हैं. यहाँ पे यू कैन आस्क एनी क्वेश्चंस एंड आंसर्स. यहाँ पे अनाउंसमेंट्स होंगी विच विल बी फ्रॉम द इंस्ट्रक्टर्स. यू विल ऑल्सो हैव एक्सेस टू द ग्रेड बुक्स एंड फर्दर रिसोर्सेज शुड द नीड बी. दिस इज़ द कोर्स कंटेंट. यहाँ पे आपको हर मॉड्यूल की डिटेल्ड कोर्स जिसके अंदर आपको इंट्रोडक्शन से लेके बूट कैंप ओवरव्यू, व्हाट एग्जैक्टली इज़ द IELTS टेस्ट, IELTS एकेडमिक और जनरल में डिफरेंस क्या है, IELTS ऑन कंप्यूटर वर्सेस IELTS ऑन पेपर, देन यू हैव अ क्विज ऑन दिस. फिर आपका IELTS लिसनिंग मॉड्यूल है, उसके अंदर हर क्वेश्चन टाइप्स के क्विजेज हैं और असाइनमेंट्स हैं. देन यू हैव रीडिंग मॉड्यूल, writing academic task 1, writing general tasks 1 and 2, and the IELTS speaking module. So once you're inside this, you'll see a start learning link here. You need to click on start learning and you will be taken to our LMS. On your left hand side, यहाँ पे आपको नज़र आएगा हमारे बूट कैंप का कंप्लीट कंटेंट. और जैसे जैसे आप कंप्लीट करते रहेंगे यू नीड टू क्लिक ऑन मार्क एज कंप्लीट सो दैट आपकी प्रोग्रेस यहाँ पे नज़र आ जाए. यू सी प्रोग्रेस 1 of 67, इट मीन्स 1% आपकी प्रोग्रेस कंप्लीट है. वेलकम टू द IELTS ऑनलाइन बूट कैंप. अगर आप इसको भी इस मार्क एज कंप्लीट कर देते हैं तो यू विल बी ऑटोमेटिकली टेकन टू द नेक्स्ट पेज, टू द नेक्स्ट लेसन, और यहाँ पे आपकी प्रोग्रेस इस तरीके से नज़र आएगी. सो लेफ्ट साइड पे आपका कोर्स कंटेंट है, राइट साइड पे डिटेल्स हैं, वीडियोस हैं, आपके गूगल मीट के सेशंस हैं. जो भी गूगल मीट के लाइव सेशंस होंगे वो यहाँ पे आपको नज़र आएंगे. फॉर एग्जांपल ये एक लाइव सेशन था जो कि ऑन द 14th of October 2024 at 7:30 PM. तो ये लिंक इसलिए एक्सपायर हो गया बिकॉज एट द मोमेंट ये लाइव लेक्चर एग्जिस्ट अभी नहीं करता. But in order to see that when is going to be the next live session, we can go on to any other module and you can see that we have lecture 1, introduction to the IELTS on computer. Wherever you see this icon, this is a Google Meet icon.
So this means that it's going to be a live session. Once you click on it, you will be taken to this page. यहाँ पे गूगल मीट का सेशन होगा and it will show you the exact time in days, hours, minutes and seconds that when that online live lecture will begin. The start date, the end date and the email address जिससे होगा. All you need to do is click join meeting and you will be taken to Google Meet to join. Of course अभी तो कोई lecture online start नहीं हो रहा. That's why we're going to cross it out. But this is an excellent way to know कि आपका अगला live lecture कब है. And whenever we create a live session, आपको एक email भी जाया करेगी जो कि इस तरह की दिखेगी, जिसमें आप इस लेक्चर को अपने गूगल कैलेंडर पे ऐड कर सकते हैं. यू कैन ऐड गो ज्वाइन विद गूगल मीट एंड यू कैन सी द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स जो कि यहाँ पे ऑनलाइन होंगे. इसी तरीके से वंस यू कम बैक यू विल बी रीडायरेक्टेड हियर. यहाँ पे आपको मार्क एज कंप्लीट की ऑप्शन इसलिए नहीं नज़र आ रही बिकॉज दिस इज़ वर्क इन प्रोग्रेस. जब तक ये शुरू नहीं होगा और कंप्लीट नहीं होगा इट कैन नॉट बी मार्क्ड एज कंप्लीट. सिमिलरली आप वीडियोस भी देख सकते हैं यहाँ पे. फॉर एग्जांपल आइल्स ऑन कंप्यूटर राइटिंग पार्ट 1 एंड 2 अटेम्प्ट. ये किस तरह होता है? यू कैन वॉच अ वीडियो एंड देन मार्क इट एज कंप्लीट. हियर समथिंग रियली गुड एंड इंटरेस्टिंग. फॉर एग्जांपल समरी कंप्लीशन प्रैक्टिस. दिस इज गोइंग टू बी अ क्विज. आपने समरी कंप्लीशन पे लेक्चर लिया. यू क्लिक ऑन स्टार्ट क्विज एंड यू विल बी एबल टू हेयर अ रिकॉर्डिंग एंड देन आंसर द क्वेश्चंस. ठीक है. For example, it could be any random. ठीक है, आपने यहाँ पे आंसर किया. Click on submit quiz and you will be taken to a new page where you will be shown with your status. If you click on details, आपको ये पता चलेगा कि आपके आंसर्स क्या थे और एक्चुअल में आंसर करेक्ट क्या था. You need to start quiz. और यहाँ पे you need to listen and answer the multiple choice questions. So you can see कि इसको कितने अच्छे तरीके से हमने कैटेगराइज किया है. This is the entire purpose of LMS. और यहाँ पे हर मॉड्यूल के हर क्वेश्चन टाइप्स के आगे 1 से 2 क्विजेज हैं. You want us to add more, we'll add more. और जैसे ही आप मार्कर्स कंप्लीट करते रहेंगे आपके यहाँ पे टाइम है वो भी आपको नज़र आएगा. So let's go to the writing task 1. If you leave the quiz, you'll abandon it. So it's better that you complete all of it. Once you click on start quiz, जैसे ही IELTS का राइटिंग टास्क 1 शुरू होगा आपको यहाँ पे 20 मिनट्स का टाइमर चलता हुआ नजर आएगा. You'll be given an image and you need to write your answer and then click on submit quiz. Once you click on submit quiz, आपको यहाँ पे ये इस तरीके से आ जाएंगे. द रिजल्ट विल बी पेंडिंग बिकॉज द इंस्ट्रक्टर्स फ्रॉम द बैक एंड विल गिव यू द फीडबैक ऑन वेदर यू पास्ड और फेल्ड. इसी तरीके से अगर आप एक और क्विज करना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा. लुक एट दिस राइटिंग टास्क 2 टाइम्ड असाइनमेंट. वंस यू क्लिक ऑन स्टार्ट क्विज द टाइम रिमेनिंग विल बी 40 मिनट्स फॉर टास्क 2. इसी तरीके से जैसे आपने टास्क 1 किया है इन द एग्जैक्ट सेम वे आपने टास्क 2 करना है और सबमिट कर देना है. सो दैट इज ऑल अबाउट दिस. उसके बाद वी हैव द स्पीकिंग मॉड्यूल. और इसके अंदर जब आप स्पीकिंग मॉड्यूल में जाएंगे व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू रिकॉर्ड फॉर स्पीकिंग पार्ट 1, 2 और 3 or your cue card on your WhatsApp or the phone recorder, and then you need to download and attach that audio file here and submit the assignment to be marked. So you need to click on start assignment submit. You need to write some information that this is my voice recording from speaking part 1 or 2, a little bit of information about what it actually is. Then you need to choose file. The max file size should not exceed more than 10 MB and then click on submit assignment. That's it. आपके assignment हमारे पास आ जाएगी. We'll listen to it and then we'll give you a feedback on it. ठीक है? You can also download it and you can, if you want to, continue the lesson. So as you complete these, you can see that your progress shows 12% complete and now it's 13%. बिल्कुल ऐसे ही है
जैसे कि आप क्लास अटेंड करते हैं और आप सारे लेसन्स भी अटेंड करते हैं, कंप्लीट करते हैं, आपकी वहाँ पे अटेंडेंस लगती है, आपको ग्रेड मिलता है, उसके बाद आपको एक कंपटीशन होता है, उसमें क्विजेज हैं, असाइनमेंट्स हैं, उसके अंदर हर किस्म के मॉड्यूल की वो तैयारी है जो कि आपको चाहिए। एंड दैट इज़ व्हाट वी आर डूइंग हियर एट एलएमएस। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट, इसके अंदर जो एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है वो है लाइव सेशंस, and a recording for every live session is also there. Thank you so much everyone for watching this detailed video. We hope you enjoy the journey of learning IELTS, and we hope it is as fun and amazing as it is for us in building this platform. And we wish you the best of luck in getting your desired band score using IELTS Karo LMS.